Electric fields is the first chapter of your electricity and magnetism. In this chapter, we'll be talking about of plates of charge और basics तो सबको पता है कि जी positive charge and negative charge के दरमियान क्या होगी attraction. Like charges के दरमियान क्या होती है repulsion. Positive would repel from each other. Negative would repel from each other. Then if we talk about the plates, where on positive plate के ऊपर कौन सी attract हो जाएगी, the negative charge is going to attract towards the positive plate, where the positive charge would attract towards the negative plate. Why? Because there's always an attraction between unlike charges या जो opposite charges होते हैं. उसके बाद we'll talk about how does electric field or the electric field strength is influenced by a change in potential difference and a change in distance. कैसे वोल्टेज और डिस्टेंस आपके पास आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करते हैं और उनका क्या काम है अब. दिस वुड बी अ न्यू कॉन्सेप्ट इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर. As I told you कि AS के अंदर you have electric fields, current of electricity and DC circuits, three chapters in your course. And in this chapter, we'll talk about the concept of an electric field, the concept of field of force, defining electric field strength as force, then representing electric field by field lines, very important in terms of MCQs. Then we have a formula of electric field strength is equal to voltage or the potential difference divided by D, which is the distance between the plates of separation. Then calculating forces on charge, and then the effect of uniform electric field. Electric fields. Now, electric charges exert forces on each other when they are a distance apart. The word electric field is used in the action at a distance. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रीजन है? मैं कहता हूँ एक रीजन है और जब उस रीजन के अंदर एक चार्ज एंटर होगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, ये क्या है, ये सारी फील्ड्स क्या है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर व्हेन अ चार्ज इज गोइंग टू एंटर, लेट्स से अ पॉजिटिव चार्ज, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. नाउ दैट रीजन वुड बी नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. अब इन दोनों के दरमियान क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोस चार्जेस. सिर्फ समझ लेंगे इस चैप्टर को, इट वुड बी मोर देन इनफ. Now there's an attraction between these two charges, positive and negative. ये क्या है? There's an electric field between them. अब इधर से कोई भी चार्ज गुजरेगा वो एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. आप बीच में उंगली गुजारेंगे या गुजारेंगे, क्या होगा? एक फील, एक फोर्स फील हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. So how do you define an electric field? Now this is definition is very important in terms of theory, paper number 2. An electric field is defined as the region of space where a stationary charge experiences a force. को हम क्या कहते हैं? That is called an electric field. Now, the direction of electric fields is defined as the direction in which a positive charge would move if it were free to do so. So, the lines of force can be drawn with arrows that go from positive to negative. Remember, positive charge से हमेशा lines are going to leave, or negative charge पे lines are always going to enter. Lines are always be going towards negative, leaving positive. And hence we also call these electric field lines क्यों as, सर लीविंग पॉजिटिव क्यों? बस ये एक रूल है कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता था, आईडीसीएस में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती थी और आती कहाँ पे थी? साउथ पोल पे. पॉजिटिव चार्ज भी ऐसा ही है कि यहाँ पे लीव लाइंस हमेशा लीव करेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी. अब हर पॉसिबिलिटी को देखते हैं. मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, लाइन कैसे जाएगी? पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ होगी. If a negative charge is here, positive is here, again this would be the direction. ठीक है. और या ये डायरेक्शन हो जाएगी, दिस वुड बी द डायरेक्शन, या फिर यहाँ से लीव करेगी, यहाँ से लीव करेगी और नेगेटिव के पास यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी. So this is how we draw these lines and they are very much asked in your MCQs and theory as well. So this is a basic rule and law of electric fields, that the field lines are originated from positive charge and end up at the negative charge. Now you can see, if we see a positive charge electric field, एक positive charge है और उसके इर्द गिर्द field देखें, the lines are originating from the positive charge. इन सब के arrows जो हैं वो outwards हैं because they have left the positive charge. If you look at negative charge electric field, you can see all the lines are arriving the negative charge. और ये आपके पास सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी आगे हम एक तो कॉम्प्लेक्स लाइंस ड्रॉ बनाना भी
देखेंगे। तो रिमेंबर, फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड the lines of the force starts on the positive charge and ends on the negative charge. This is the basic rule of electric field. And the lines of force never touch across. अब आपके पास rules of drawing electric field लिखा AS मैथ, आपने दो चीजें यहाँ लिखी। दो चीजें क्या है? नंबर वन, they are always from positive to negative, or they always originate from positive and at negative. And the second thing is they never touch or cross each other. ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं होंगी, टच नहीं होंगी। सेम द केस थोड़ा बहुत A2 में भी आपको मैग्नेटिज्म में हेल्प करेगा। वहां पॉजिटिव को समझ ले नॉर्थ पोल है, नेगेटिव को समझ ले साउथ पोल है, बाकी हर चीज वही होती है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम A2 मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक रूल हो गया that the lines are always from positive to negative. Whether that's left, right, up and down होगा हमेशा पॉजिटिव से एंड करेगा नेगेटिव पे। दूसरी चीज, they would never cross each other. इनके दरमियान गैप्स होंगे, कभी भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। These are the basic two laws of electric fields. एक साइंटिस्ट का भी नाम था that I forgot, वो आगे करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ही टोल्ड कि दे आर नेवर, उसी ने ऑब्जर्व की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। नाउ आई हैव टू प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट्स होती है और इनके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई सेपरेशन भी है। ये जो सेपरेशन है ना, इसको मैं कह सकता हूँ डी, the separation between two plates, positive plate or negative plate. And what's the direction of these lines? You can see it is still from positive to negative. अब अगर इन लाइंस को देख के आप स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे? We saw, हमने पढ़ा that the lines of these forces never touch or cross each other. The strength of the electric field is indicated by the closeness of the lines. जितनी lines आपस में close होंगी, उतनी strong electric field होगी. Means the closer they are, the stronger would be the electric field. तो अगर मैं यहाँ पे दो electric fields draw करता हूँ, ये positive plate है और ये negative field है। अब आप मुझे बताएंगे कहाँ पे electric field stronger है और कहाँ पे weaker है। एक पे electric field lines are very much close together और इन सब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और एक में थोड़े थोड़े गैप्स हैं और डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर? ए, लेफ्ट वाले में ए। एग्जैक्टली ए। क्यों? क्योंकि पहली बात है लाइंस आपस में टच या क्रॉस नहीं होंगी, होंगी हमेशा पैरेलल। बट अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जितना कम होगा, उतनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इससे हमें एक रिलेशनशिप पता लग जाता है, और वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। क्या मतलब हुआ? कि जितना डी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो वो दूसरी चीज उल्टी होगी, वो क्या हो जाएगी? वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देन कम होगी। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी हैव डिस्कवर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस।